नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड लें और अटेंडेंस दे दें लाइक का बटन दबाकर। और आज का क्लास जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा और ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आज का क्लास जो बीकॉम, एमकॉम या फिर नेट सेट का एग्जाम देने बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कर रहे हैं जो कि इन स्ट्रीम्स में जो कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे एमकॉम हो गया, बीकॉम हो गया, नेट सेट का एग्जाम हो गया, इसमें बहुत वाइटल इसका सिग्निफिकेंस रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है। हम लोग सारे ट्रेड थ्योरीज को एक बार डिस्कस करेंगे अच्छे से, इन डेप्थ में। थोड़ा सा फास्ट पेस चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलूंगा मैं, ठीक है, वरना आपका फोकस ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Alright friends, now let's move on to the next topic, which is theory of absolute advantage. Okay, this theory is also propagated by Adam Smith, and the theory suggests that a country must focus to produce the commodity that it can most efficiently produce, while the country imports the other product that it cannot produce efficiently, or it is costlier to produce, right? So to help understand this particular point, I have drawn up an example, right? It will help you to understand this particular point. So let's say there are two countries, country A and country B, right? There are two commodities as well, computer and t-shirts. So country A is producing 5 units of computer in 1 hour, that is 12 minutes for 1 unit, right? And country B is producing 2 units of that computer in 1 hour, which means it is taking 30 minutes for 1 unit. So you can see by this much, right? From this much you can understand that country B is inefficient at producing computers. So now let's come to the commodity of t-shirt. So country A takes 1 hour to produce 2 unit of the t-shirt, which is 30 minutes for 1 unit, right? Whereas country B takes only 1 hour to produce 5 units of the t-shirt, that is 12 minutes for 1 unit. So for the t-shirt section of the commodity, we can see that country A is fairly inefficient at producing the t-shirts and country B is efficient in producing the t-shirts. So from this example we can conclude that country A is more likely to export the computers and import t-shirts, while country B is more likely to export its t-shirts and import computers, right? So I hope you have understood this point through this example here, and now we are going to discuss the assumptions. First assumption is trade between two countries, right? There are two countries involved, country A, country B, for example. And second is there are only two commodities involved, right? So it can be any commodity here. It can be bread and maybe machinery or anything like that. But it is supposed to have two commodities only at a time, right? So third assumption is free trade exists. So there are no barriers to the trade, right? Trade is supposed to be free, free flow of goods. And fourth point of assumption is labor is the only factor of production. All right, so this theory assumes that labor will only be the only factor of production, right? There is supposed to be no other factors of production. So the cost of production will also include only one part, right? That is the labor cost. Now the fifth point of assumption is free mobility of labor, right? Which means that labors can be right, moved from one unit of production to the another unit, but it must be within the same country, right? All right. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एमकॉम, बीकॉम या नेट सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, ठीक है? जहां तक हो सकेगा मैं उन डाउट्स को एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।